we'll first take an update on what lies beyond Chandrayaan 3. And I'll open something up which is a little new, maybe a little technical, but I'll make it simple. And then we'll take up questions. Okay, we all know that we've done a great thing by reaching the moon and one of the first nations to go to the south pole of the moon. And any polar landing is a very difficult operation, which ISRO has accomplished with aplomb. And hats off to them. हमारी तरफ से और आप लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं जरूर देना चाहिए. एंड वेल डन, ग्रेट शो, राइट. एंड जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, बहुत लोगों ने हमें हंसी मजाक उड़ाया, खास करके पाकिस्तान और चाइना से. लॉट ऑफ सटायरिकल रिमार्क्स के, कट प्राइस अटेम्प्ट वगैरह वगैरह. चाइना इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, लॉट ऑफ बैड रिमार्क्स, but we've done it. And remember, there's a big lesson. You learn from failures more than you learn from success. And India has learned from its failures. And this is our history. कि हम लगातार we keep learning from our failures. Any person who does not know to learn from his failures is a fool. Okay, let's take a. Why am I talking of what's beyond Chandrayaan? Uh, 2 years back, 3 years back, I wrote this article. You can go to Ganashot, my website, and have a look at it. And it was a well-researched article which I wrote for the Army Training Command Journal, in which I researched India's energy security through space. And how the armed forces can get energy secure through space. And one of the important milestone in this whole game is being able to land on the moon. That is why I thought चंद्रयान के बाद इसके बाद, हाँ, चंद्रयान के बारे में हम सब बात कर सकते हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, why? That's what I wanted to put it across to all of you. Right, now in this slide picture graphic, you'll see the missions to moon. Right, it's a little hazy, but have a look at the bottom. By country, Russia has done 50 traverses to the moon, US 47, followed by China, India, Japan, Europe, and everyone else. Now अगर आप देखेंगे, right, Russia has done only one. Okay, after it broke up, all earlier versions or all earlier journeys were as USSR. US has done a lot, and now it is going through manned missions also. And China, followed by India, right? But this doesn't get, this is only numbers. इससे कुछ हमें पता भी नहीं चलता. Even Israel has gone to the moon once. So what is more important? It is this. How many successful moon landings? You look at the United States, right? Manned missions. Only United States has done manned missions to the moon. China, Soviet Union, and India. There's no fifth country. That everyone knows by now. Okay. China has landed on the far side of the moon, right? Which is an accomplishment. And we have landed on the pole on the near side, which is there. जो बाएं side में green dot है. बाकी सब हो गया है. And I think Russia also wanted to go to the near side of the moon and to the pole, which it failed. But that's okay. Failures in space have to be expected, because you learn through failures in space. And space is the toughest medium to exist and travel. अगर आपके पास स्पेस साइंस हासिल कर लिया और उसके ऊपर काबू कर लिया, तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आप काबू कर सकते हो. Okay, so now I'll get on to something beyond this. Mars. I'll tell you why Mars.
देखिए, मार्स के लिए बहुत लोग गए हैं, मंगल, राइट। अभी तक 9 देश गए हैं मार्स में, और वहां 49 मिशन हो चुके हैं लगातार। खैर, सबसे पहले तो इसमें भी यूएसए और यूएसएसआर ही थे। उन दिनों में 1960 से लोग मार्स में जा रहे थे, मंगल में। पर आजकल उसका तेजी पकड़ा है। अगर आप देखते हो तो जो 2000 से लेकर इस शताब्दी, इन दिस सेंचुरी, बहुत लोग गए हैं, और आगे जाने का भी इन सबका उम्मीद है। क्यों जाना चाहते हैं, राइट? हमने भी भेजा है, और ये आज नहीं, हमने भेजा है 2013 में। अभी तक वो ऑर्बिटर वहां घूम रहा है, इट्स गेटिंग डेटा, मंगलयान जो, राइट। व्हाई आर पीपल गोइंग टू मार्स? कुछ तो होगा। द फंडामेंटल रीजन ये है कि वहां पदार्थ मिलेंगे, यू विल गेट मिनरल्स, यू विल गेट गोल्ड, यू विल गेट एक्स वाई जेड। बट व्हाट पीपल नीड इज एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। और जो देश वहां जा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है एनर्जी का। चाइना, इंडिया, यूएसए। क्योंकि इनका आबादी इतना है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है इनका, कि बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के काम नहीं चलेगा। सो विल टॉक अ लिटिल अबाउट दिस। ये दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एनर्जी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी, जस्ट इंडिया का। देखिए, अभी जो दैट लाइन इज द ब्लू लाइन, तकरीबन हमें 2030 तक, जस्ट 2030, अगर हमें $60 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, नंबर 3 इकोनॉमी बनना है, वगैरह वगैरह है, तो आपको एनर्जी चाहिए। एंड यू नीड अबाउट ट्वाइस द एनर्जी जो अभी आज आपके पास है। अगर आपको नंबर 2 इकोनॉमी बनना है, तो और 10 साल में और भी एनर्जी चाहिए। सो विदाउट एनर्जी यू कैन गो नोवेयर, राइट। एनर्जी सोर्सेस क्या है? वो है, हमारे पास हाइड्रो है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, रिन्यूएबल्स है, और स्पेस। As far as hydro, thermal, nuclear and renewables, there are limitations. हम एक हद से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने बोला इंडिया हैज गॉट द थिंग ऑफ थोरियम। थोरियम के बारे में हमने बात किया एक स्पेशल एपिसोड में, इंडियाज क्वेस्ट फॉर थोरियम। प्लीज हैव अ लुक एट दैट एपिसोड, आपको पता चलेगा, राइट। बट जो हाइड्रो है, इट हैज गॉट ट्रेमेंडस लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजी। थर्मल, इवन मोर पोल्यूशन। थर्मल मतलब आप कोयला जला रहे हो, कहां से आएगा इतना कोयला? एक दिन ये खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर, हमारे पास थोरियम है, पर मैंने बताया जब तक आपके पास प्लूटोनियम बरामद नहीं होता, आप थोरियम साइकिल शुरू नहीं कर सकते। और थोरियम साइकिल शुरू करने के लिए, प्लूटोनियम बनाने के लिए, हमें काफी तादाद में यूरेनियम चाहिए, जो हमारे पास आज नहीं है। तो उसका टाइम लगेगा, पर आएगा। मेरा मानना है कि ये आएगा। इसके अलावा there is lot of requirement of, or rather lot of research on renewable, solar, wind, waves। वाइजैग में है एक वेव एनर्जी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सोलर में तो हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना रूफटॉप सोलर वगैरह लग के। लास्ट है स्पेस। सो आई वांट टू फेमिलियराइज यू विद व्हाट इज गोइंग ऑन, और इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर। और लोगों का मानना है, एंड दिस इज एक्चुअल, if you can harness space based energy, you've solved energy problems complete. And what you will get out of space based energy will be absolutely clean energy, no pollution. Okay, what does it involve? But it involves going around in space to long distances. How do you go? And for that, you need water. Pani. बोलते हैं water is the oil of space. So let me spend a couple of minutes on water as oil of space and then go. So what do you get out of water? पहले तो जीवन के लिए पानी चाहिए पीने के लिए। अगर आप स्पेस कॉलोनाइजेशन करना चाहते हो,
या मंगल में जाना चाहते हो, मंगल में मैंड मिशन भेजना चाहते हो, तो पानी चाहिए आपको। पर पानी से ज्यादा आप पानी को तोड़ के, बिकॉज वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज अ बेसिक फ्यूल। अगर आप घर में अगरबत्ती जलाना चाहते हो या गन के अंदर प्रोपल्शन डालना चाहते हो, सबके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना कोई जलता नहीं, प्रोपल्शन नहीं होता। सो ऑक्सीजन इज द फंडामेंटल ऑफ यू नो propulsion, and hydrogen is the fuel. So if you have hydrogen and oxygen, you can propel yourself. So the energy is in water. You break up hydrogen and oxygen from water and make it into a fuel cell, you will get energy. तो आपको propulsion के लिए पानी चाहिए, आपको एनर्जी, ऊर्जा के लिए भी आपको पानी चाहिए। इसीलिए हम मून में जाना चाहते हैं। मून में जाके क्या करेंगे? डार्क साइड ऑफ द मून या साउथ पोल में पानी ढूंढ रहे हैं हम। अगर वहां पानी मिल गया तो एज पार्ट ऑफ स्पेस माइनिंग, उस पानी को यू इलेक्ट्रोलाइज दैट वाटर एंड स्प्लिट इट एंड यूज इट एज एनर्जी फ्यूल सेल्स टू गो वेयर एवर यू वांट टू गो। Because if you want to do mining there, you need lot of energy. You can't take energy from here and work it out. किफायती नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं है। But more importantly, you need something else there. And what is that something else? Is the crux of the problem. Right? And if you understand that, then you'll understand हम क्यों क्या कर रहे हैं। अभी एक और हम भेज रहे हैं L1 to solar system near the sun called Aditya. Why? You want to go there, study the sun energy, helium-based energy. And I'll just explain to you, then you'll understand helium also कहाँ आता है, ये पूरा कहानी है। It's interesting. जब मैं when I did my research on this, a lot of good things came out. Lot of things fall into place. क्यों हम इतना खर्च करके मंगल जा रहे हैं, खर्च करके हम चांद पे उतर रहे हैं। वहां तो है, जीवन भी नहीं है, पर वहां हमारा फ्यूचर जनरेशंस के लिए जीवन वहां आधारित है। ओके, सो आई वुड लाइक टू टॉक ऑफ हीलियम 3। संदीप ने हीलियम 3 में क्वेश्चन मार्क लगाया एंड आई विल रीड इट, और जिस तरीके से मैं समझाता हूँ वो समझाएंगे। ये जो है एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम माय आर्टिकल एंड माय रिसर्च आर्टिकल, सो रीड इट। Helium 3 deuterium gives you fusion. Okay, first you need two, helium and helium 3 basics. Let's understand this. Helium is the second most common element universally available, but is scarce on Earth. ये हीलियम जो है वो स्पेस में बहुत बरामद है। Helium is needed in applications from space exploration to quantum computing. अगर कल के दिन क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको माहिर होना है तो आपको हीलियम चाहिए। और हीलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आजकल दुनिया में हीलियम बरामद होता है यूएसए, अल्जीरिया, कतर एंड तंजानिया, और कहीं आपको on earth you don't get helium, and that's also in limited quantity. At this point of time it is more because you don't need it. You don't have that much. But once quantum computing comes, you need helium in a big manner. And if you want space exploration, you need helium. Okay. Now, helium normal is not the thing. Helium 3 is what you need. The most common isotope is helium 4. Helium 4 has 2 protons and 2 neutrons. And it is stable. Right? ये बिगड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता। However, जैसे मैंने बोला, इंटरेस्टिंग आइसोटोप हीलियम 3 है। ये नॉन रेडियो एक्टिव है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। ये आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, बट वैसे तो ये बड़ा रेयर एलिमेंट है। ओके, इन टोटल
0.01 metric tons of helium-3 exist on Earth. बहुत कम है, बहुत कम है. आप देखिए, right? Helium-3 doesn't exist in Earth in the way we want it. Helium-3 has rare and valuable properties, right? Helium-3 is most sought after for fusion. Fusion के लिए हमें helium-3 चाहिए, right? And ये उस वक्त मैंने लिखा था, it will most likely solve our coming energy crisis. ये दुनिया में होने वाला है crisis. Okay, अभी we'll go one step further. Helium के बारे में सुन लिया आपने. We'll go to deuterium fusion energy. What is fusion? फ्यूजन में नॉर्मल फ्यूजन जो हम बात करते हैं उसमें क्या है, ड्यूटीरियम और ट्रिशियम को हम जोड़ते हैं. नॉर्मल रेडियो एक्टिविटी में या न्यूक्लियर एक्टिविटी में हम एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर मारते हैं, जैसे गोली मारना है ऐसे, या शूट करते हैं, वो फटता है. जब वो फटता है एनर्जी निकलता है. फ्यूजन उल्टा है. इसमें क्या है, दो अन्य अलग पदार्थ को हम जोड़ते हैं. जब जोड़ते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, जिस तरीके से यहाँ दिया है. ये ड्यूटेरियम ट्रिशियम का फ्यूजन है जिसमें हीलियम और एनर्जी निकलता है और एक न्यूट्रॉन भी निकल आता है. फ्यूजन वो चीज है, द नेट गेन आफ्टर पुटिंग टू सेपरेट एटम्स टुगेदर, you get energy more than what you put in. That is the beauty of fusion. कि net gain is there in fusion and it's the most difficult to happen. क्योंकि आपको बहुत एनर्जी चाहिए ये दो अलग अलग पदार्थ को जोड़ने के लिए. ओके, एक्चुअल जो हमें which is really required for fusion based energy, वो ये है. ये इक्वेशन जो हमने लिखा है वो है मोटा मोटा तौर पर दिखा रहा हूं. ड्यूटेरियम और हीलियम, ड्यूटेरियम और हीलियम को जोड़ने के बाद हमें नॉर्मल हीलियम 4 मिलता है, यानी हीलियम 3 और ड्यूटेरियम, राइट. ड्यूटेरियम इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. इन दोनों को जोड़ने से हमें एक नॉर्मल हीलियम 4 मिलता है, पर उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन मिलता है, और वो प्रोटॉन दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्सेस गेन और एनर्जी बरामद होता है. ये है फ्यूजन का बेसिक फंडामेंटल, ड्यूटेरियम और हीलियम 3. बट हीलियम 3 तो है ही नहीं हमारे पास. हीलियम 3 इन स्पेस, यहां आता है स्पेस, क्योंकि हीलियम जो है स्पेस में बरामद है, अंतरिक्ष में. It is estimated there are 1 million tons of helium-3 embedded in the top surface layer of moon soil due to constant bombardment by solar winds. क्योंकि मून, ये चंद्रमा में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये सोलर रेस मार मार के वहां ये हीलियम-3 दाखिल हो गया है और जम गया है उधर, राइट. इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, इसीलिए उसको मून सरफेस को माइनिंग करना पड़ता है. enormous quantities of moon soil has to be processed by heating it at 600 degrees centigrade, राइट. यानी कि 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको ले जाना पड़ता है. वो वहां गर्मी बरामद है क्योंकि वहां दिन में इन लूनर डे आप ये टेम्परेचर ले जा सकते हो, पर उसको कुछ करना पड़ेगा, वो अलग बात है. A permanent moon base must be established and industrial scale helium-3 production has to be set up. ये पहला कदम है हम जो ले रहे हैं. पहले हमें पता चलना चाहिए कि क्या हीलियम-3 वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस कॉन्सेंट्रेशन में, कहाँ मिलेगा, और उस कॉन्सेंट्रेशन को और कॉन्सेंट्रेट करके उसके लिए एक फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा, राइट. और ये we have to do this. It is estimated that 25 tons of helium, यानी कि एक ट्रक लोड, 25 टन्स तो एक ट्रक लोड से ज्यादा नहीं होता, राइट. एक कंटेनर लोड, fully loaded space shuttle cargo bay could power entire United States for a year. एक साल के यूनाइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगा. In comparison, India's
एनुअल एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी 50%। हमें सिर्फ आधा टन चाहिए। अगर हमें आधा टन मिल गया, हमारा पूरा एनर्जी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो जाएगा। उस वक्त के हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल वगैरह वगैरह आप जरूरत ही नहीं है, पर उतना आपको हीलियम बनाना पड़ेगा, हीलियम-3, और उसके लिए हमें वहां चांद में जाना पड़ेगा। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट कुड फर्दर रिड्यूस आफ्टर डिस्काउंटिंग अर्थ बेस्ड सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर। यानी अगर आप जो नॉर्मल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे पास है, उसको अगर घटा दोगे, थोड़ा कम की जरूरत है, उतना बड़ा फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, पर चाहिए। तो दूसरा पदार्थ जो हमें चाहिए, ड्यूटीरियम, राइट, फ्यूजन के लिए, वो क्या है कि अभी ड्यूटीरियम जो है, इट अकर्स एज 166 आउट ऑफ 1 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि अगर 1 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स अगर आप लेंगे, तो आपको 167 एटम्स ही ड्यूटीरियम मिलेंगे। बहुत कम मिलेगा आपको हमारे एटमॉस्फेयर। हाउएवर मार्स में, ये आपको मंगल में ही मिलेगा ड्यूटीरियम, 833 आउट ऑफ एवरी मिलियन हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि 5 गुना ज्यादा है वहां। और ड्यूटीरियम जो है बहुत महंगा है, ये अभी भी महंगा है। ये अभी हम प्री फ्यूजन इकोनॉमी में हैं। एक बार फ्यूजन का सिस्टम शुरू हो गया तो ये बहुत ही महंगा पड़ेगा दुनिया में, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें मार्स में जाना पड़ेगा ड्यूटीरियम को लाने के लिए, इसीलिए सब मंगल में घूम रहे हैं। However, to run a Mars settlement, water electrolysis is mandatory। वही बात है, अगर आपको मंगल में जाके पूरा वहां कान लगा के, और if you mine for helium-3, you have to have energy from moon to hop to Mars, right? You cannot go on your own. You have to electrolyze water and get deuterium as a byproduct, or go to Mars and get deuterium from there. So helium, अगर आपको मून में मिल गया तो very good, otherwise you have to search for it in Mars. So tomorrow's energy is fusion। पर फ्यूजन तो आज जैसे हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हीलियम पकड़ लो, ड्यूटीरियम पकड़ लो, उसके साथ साथ मटेरियल्स, रेयर अर्थ पकड़ लो मून के ऊपर। कोई बोल रहा है कि वहां गोल्ड मिल जाएगा आपको, कोई बोल रहा है कुछ अदर मिनरल्स आपको वहां मिल जाएंगे, पर मेन चीज है ऊर्जा, क्योंकि इसके बिना हम हमारा डेवलपमेंट रोक लगाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले, 4 दिन, 10-15 दिन पहले, जब मैंने बताया इनविटेबल डिक्लाइन ऑफ चाइना। क्यों होगा रहा डिक्लाइन ऑफ चाइना? बिकॉज दे डोंट हैव एनर्जी। You want to develop, you need to have energy, and they don't have energy today to develop. Sorry. So if same situation will come for us also, we will not have the energy tomorrow, despite thorium. So everyone, USA, रशिया, जापान, इसीलिए मंगल में घूम रहे हैं सारे। क्यों घूम रहे हैं? एनर्जी चाहिए। यहां तक यूएई, जिसके पास तेल है, वो भी वहां घूम रहा है। So the next question is anything being done about fusion? We are not there for fusion, but something is happening. Okay, right, here comes the funny part and the insidious part. चाइना का ये आर्टिकल है, आज का आर्टिकल है ये। अभी मैंने उसको डाउनलोड किया था और इसमें दिखा रहा हूं। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आर्टिकल है। चाइनीज पावर फर्म्स हेल step forward in quest to build artificial sun. So they've come out and said, we are going to build a reactor as part and get the artificial sun. Okay, this is the funny part. And ये जो है चाइना का झूठ बोलने का तरीका है। क्यों मैं बोल रहा हूँ झूठ बोलने का तरीका? 2016 में इन्होंने बोला था
कि we have moved a step closer to get artificial sun for via nuclear fusion. न्यू डॉन वगैरह ये 2016 7 साल पहले। और 2019 में इन्होंने ये बोला था कि हमारा जो आर्टिफिशियल सन यानी कि फ्यूजन रिएक्टर की बात हो रही है 2020 तक रेडी होगा। उसके बाद हर 3 महीने 4 महीने में ये आर्टिकल वापस इट कीप्स कमिंग बैक अबाउट द आर्टिफिशियल सन एंड फ्यूजन व्हाट चाइना इज डूइंग अ ब्रेक थ्रू इन ऑल दिस। ओके, सो यू विल सी दिस स्टोरी अबाउट चाइना। उनका जो नैरेटिव है कि वी आर ऑन द टॉप फॉर आर्टिफिशियल सन एंड फ्यूजन, बट द एक्चुअल थिंग इज चाइना इज नोवेयर नियर। All this artificial sun which China is now propagating and building a narrative is part of ITER, International Energy Resource Consortium, which is with EU. And as part of ITER, what they are building is part of ITER. It is not independently. It is not something very great China technologically. मैं बार बार बोलता रहता हूँ चाइना का टेक्नोलॉजी चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। So this narrative which they are bringing out that they have cracked artificial energy, nuclear fusion and get through the artificial sun project is fake. Every 6 months you find an article, and the last article was today. But artificial energy or or rather fusion energy, the first time was done at Livermore in California. This was done around October last year. I remember I was at that time in California, and I read about it there. They have done this. They have succeeded in the first stage through nuclear fusion. It came out as a small headline. Wow, utna shor sharaba nahi hai. But it got picked up. Lot of us have read it. US scientists achieved net energy gain for second time. This is the second time hai. They also put out in Financial Times. This is the article in Financial Times. They've done it twice recently, last month, but the first time they did it in October. So the first breakthrough in nuclear fusion is in USA. Are they ready to make a nuclear reactor out of a fusion reactor? That's far away. That I think anything between a decade to 2 decades. And in this period of 1 to 2 decades, the hope is that we do enough space exploration and have adequate helium-3 and adequate deuterium to carry out fusion here, and you're able to get it back from there. Kha bhai ye, but you have to dream. If tomorrow you want energy and you want to do so many things, you want to do quantum computing, ye computing, wo computing, and AI and all that, you need energy. So this is what I thought I'll share with you. I'll be more than happy to answer questions on this and other things also, and more. I've just shared some things which interested me, and I keep doing.